Hi guys, welcome. Now we'll see the current affairs of 18th October. Okay, okay. So the first we'll see the Constitutional Bench of Supreme Court upholds the validity of Section 6A of the Citizenship Act. तो आर्टिकल 6 है या सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। तो 6 आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड है, स्टार्टिंग ऑफ द आर्टिकल, जो माइग्रेट कर गए थे बेसिकली पाकिस्तान को। एंड पाकिस्तान बेसिकली ईस्ट और वेस्ट दोनों है, यानी कि जो ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश भी है, ठीक है। कमिंग टू दिस सेक्शन 6A is a special provision. Give me a moment, I'll just going to record this. Okay. Now, the Section 6A is a special provision added through Citizenship Amendment Act 1985 is okay. Okay. So ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 से एक्ट किया गया है। तो मेमोरेंडम का नाम है असम अकॉर्ड्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द लीडर्स ऑफ असम मूवमेंट, ठीक है। ओके ओके नाउ मूविंग फर्दर, थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं इसकी। ओके नाउ इट्स गुड। It conferred citizenship to those who migrated from East Pakistan, तो very important, East Pakistan जो बांग्लादेश है अभी, to the Assam from 1 जनवरी 1966। तो देख सकते हैं आप, ये डेट आप देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस के 66 से लेकर 71 तक, ठीक है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन एज अ फॉरेनर। देखो, अगर 1966 के बाद 77 67 में आए आप, ठीक है, यहाँ पे तो 67 में अगर आप आए तो अब 67 से 10 ईयर होते हैं 77, 77 10 ईयर, ठीक है, कंप्लीट कर लिया आप। पर ये तब से काउंट होंगे जब से आप काउंट एज अ फॉरेनर काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप फॉरेनर काउंट हुए 69 में जाके, तो 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। बेसिकली आर्टिकल 6 था क्या? Article 6 is nothing, it's related to the citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. तो जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे, ठीक है। सो कंडीशंस क्या थी इसमें? तो जो पाकिस्तान से इंडिया आया है पर्सन आफ्टर पार्टीशन 1947, ठीक है, उसके लिए कंडीशन ये थी कि उसके पेरेंट्स या पर्सन वो खुद, यानी कि मैं या मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न होने चाहिए इंडिया में, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, ये तो होने ही चाहिए। और उनमें से दो कंडीशन दी गई थी, यानी कि मेरे फादर ग्रैंड जो मेरे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या मैं इंडिया में बॉर्न होना चाहिए, या फिर पर्सन जो है माइग्रेट किया हो पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 के पहले, ठीक है, एंड हैज़ बीन ऑर्डरली रेजिडेंट इंडिया सिंस माइग्रेशन। देखो, 1948 से पहले की माइग्रेशन हुई थी, इसी दौरान 19 जुलाई 1948। तो बेसिकली जो पर्सन है वो पाकिस्तान से माइग्रेट किया इंडिया में बिफोर दैट माइग्रेशन, बिफोर दैट व्हाट वी कॉल दैट, ओके ओके, लेट अस जस्ट फॉरगेट दैट, कि जो डिवीज़न हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, उससे पहले अगर आप आ गए हो इंडिया में, ठीक है, तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, ठीक है, तब आपको मिलेगी। सेकंड इज था कि आप पाकिस्तान टेरिटरी में जा चुके हो, ठीक है। ओके, हमने बात की अभी अभी कि पाकिस्तान पाकिस्तान से आप माइग्रेट कर चुके हो। नाउ इफ अ पर्सन हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तानी टेरिटरी टू इंडियन टेरिटरी आफ्टर 19 जुलाई, एक तो हो गया ना 19 जुलाई के पहले आ गए आप, लेकिन अगर आप 19 जुलाई 1948 से बाद में आते हो, ठीक है, ठीक है, तो देन यू हैव टू बी reside at least 6 month, and after 6 month you should register yourself by the officer appointed by the government, जो भी है ना, जो भी प्रोसीजर होगा उसके अकॉर्डिंग। सो दीज आर द टू कंडीशंस ऑफ आर्टिकल 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। नाउ द व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन दैट?
on legislative competence of parliament to enact section A। सो बेसिकली अगर आप लेजिस्लेटिव पावर देखें गवर्नमेंट की या फिर पार्लियामेंट की बेसिकली, तो कोई चीज़ अगर अमेंड करनी है तो उसके लिए आपको अपना शेड्यूल देखना पड़ेगा, ये वो आपके शेड्यूल या फिर आपकी लिस्ट के अंदर आ रही है कि नहीं। तो इट इज़ आर्टिकल 246 का यूज़ करते हुए इन्होंने तो एक्सरसाइज द पावर ऑफ आर्टिकल 246 एंट्री 17 लिस्ट वन यानी कि यूनियन लिस्ट, ठीक है, सेंटर की लिस्ट। तो 17 जो आर्टिकल है विच डील्स विद द सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन एलियंस, ठीक है, एलियंस वो वाले एलियन नहीं है ऑफकोर्स। 14 सो 14 वायलेट नहीं हुआ क्योंकि 14 इज इक्वालिटी, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अगर आप यहाँ से आ रहे हैं तो आपको स्पेशल प्रोविजंस मिलेंगे, ठीक है। तो असम का जो स्पेशल सिटीजनशिप लॉ है इट इज़ नॉट वायलेटिंग द इक्वालिटी प्रिंसिपल आर्टिकल 14, सो दैट बिकॉज द माइग्रेंट इशू जो है असम का वॉज यूनिक, ठीक है, कंपेयर टू अदर इंडिया। सो कल्चर पे भी कोई बेसिकली हाँ कि बेसिकली कंडीशंस ये भी होती हैं, अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो आपको इंडिया में तो रह रहे हो लेकिन आप इंडिया के ही ओपनली आप इंडिया ऑफ कोर्स ओपनली तो कोई करता नहीं, लेकिन अगर ओपनली इंडिया को हार्म कर रहे हो इन एनी सेंस कल्चरल सोशलिस्ट, तो आपको फिर सिटीजनशिप ले ली जाती है। तो जो असमी माइग्रेंट्स हैं जो आए हैं कल्चरली नॉट हार्मिंग द असमीज, सो दैट्स वाई आर्टिकल 29 क्लॉज 1 इज नॉट वायलेटिंग, ठीक है। सो 1955 का एक्ट 5 बेस ऑफ जो द कैसे आप सिटीजनशिप ले सकते हो, 5 वेज उसकी, बर्थ से, डिसेंट से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन से, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। डुअल सिटीजनशिप का हमारे यहाँ है नहीं कुछ, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हम देख चुके हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट नोट डाउन इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट upholds validity of section 6A of citizenship act, वेरी मच इम्पोर्टेंट। थ्रू द क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम हो रहा है मेंस का, ठीक है, जिसमें आपकी पॉलिटी आ रही है, जिसमें आपके करंट अफेयर्स आ रहे हैं, जिसमें आपकी पॉलिटी की होल नॉलेज कंसीडर हो रही है, 5-6 आर्टिकल्स इकट्ठे लग रहे हैं इसमें, ठीक है। 246 एंट्री 17 लिस्ट 1 इक्वालिटी, Article 14 not violated and not harmed the culture, जो बेसिकली असमीज कल्चर, ठीक है। तो कल्चर के लिए आपके पास 29 क्लॉज 1। कमिंग नेक्स्ट, इस्लामाबाद होस्ट 23rd मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट्स। सो SCO 23rd मीटिंग इस्लामाबाद में हुई। तो 8 significant agreements were signed, focusing on the issue of SCO budget, operation of secretariat, and counter-terrorism efforts. So key takeaways यहाँ से की थी, तो इंडिया ने 3 evils basically define करे। So which is a terrorism, of course mention करना ही था, extremism and the separatism, very much important terms, against which are against the of course regional peace and development. India did not endorse China Belt and Road Initiative on grounds of territorial integrity and sovereignty. Meeting saw criticism of unilateral sanctions the Western nations have imposed on Russia, of course. Meeting further advanced India's digital agenda, incorporating digital public infrastructure and digital inclusion into SCO cooperation framework. SCO के लिए significance सिग्निफिकेंट जो SCO करता है, ठीक है, मतलब बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ SCO फॉर इंडिया। सो काउंटरिंग द टेररिज्म, ऑफ कोर्स द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो बनाया गया है।
provides access to key information and intelligence on movements of terrorists and drug trafficking, counter-terrorism. So it's a regional anti-terrorist structure. Okay, forum for cooperation with Central Asian countries. So India create a platform to pursue connect with the Central Asia, of course. Cooperation with Central Asia, energy security. The region is home to 4% of world natural gas reserves and approximately 3% of oil reserves. Of course, the रशिया की बात हो रही है, है ना? तो रशिया के पास having the natural gas and the oil reserves, balancing Chinese dominance in the region, of course. तो ऐसा है कि अगर चाइना का रीजन को बैलेंस किया जा रहा है, क्यों? अगर चाइना किसी में भी नहीं होगा, कहीं ना कहीं तो आपको काउंटर करना पड़ेगा ना चाइना को। अगर वो अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है तो वो बढ़ाने दो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो उसको डिप्लोमेटिकली काउंटर करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। यूएन हर वक्त नहीं देगा साथ, तो वेस्टर्न इज जस्ट यूजलेस। वेस्टर्न है वो कुछ भी कर लो, वो सिक्योरिटी काउंसिल में सीट्स नहीं देने वाले, चाहे कुछ भी कर ले इंडिया। ठीक है, कितना भी कर लो, यूएस का कर लो, ठीक है, मुंह पे ये सब मान जाएंगे और उधर जाके वीटो यूज कर देंगे। ओके, चैलेंजेस ऑफ एससीओ, डिस्प्यूट अमॉन्ग मेंबर्स कंट्रीज के बीच में ऑफकोर्स होना ही है। डोमिनेंस चाइना रशिया ऑफकोर्स नॉट मच ऑफकोर्स, इट ऑन द पेपर नहीं होगी, ये ऑन द फेसेस भी नहीं होगी, बैक एंड ये होगी जरूर चाइना इंडिया, चाइना से रशिया को डाइवर्जेंट इंटरेस्ट ऑफ मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो एससीओ बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर। सो जेनेसिस इसका परमानेंट इंट्रा गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एस्टेब्लिश जो 2001 में शंघाई में बनी है। ठीक है, पास्ट ऑफ द पार्ट जो देख सकते हो उसके जो पार्ट्स हैं, सो करंट मेंबर्स देख सकते हो आप, है ना? इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया और अफगानिस्तान इन द ऑब्जर्वर। ठीक है, नाउ मूविंग नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल अभिधम्मा दिवस। दैट मीन्स इंटरनेशनल अभिधम्मा अभिधामा दिवस, IAD. Okay, Ministry of Culture in association with the Indian Buddhist Confederation. Ministry of Culture with International Buddhist Confederation. Okay, so it basically commemorates the day when Lord Buddha descended from celestial realm, ठीक है, to सन कासिया इन उत्तर प्रदेश। सेलेस्टियल realm से यानी कि देवलोका टू बेसिकली बसंतपुर उत्तर प्रदेश के लिए गए थे। अशोकन एलिफेंट पिलर एट सन्स कासिया marks is significant event. So Ashokan elephant pillar at Sankasya marks the descendant from celestial realm to Sankasya, UP. No? So it coincides with end of a first trainee retreat. That is the period of 3 months when bhikkhus, okay, bhikkhus must resides in one place. ठीक है. So about Abhidhamma. So Abhidhamma is a collection of teaching or suttas representing earliest completion of Buddha's philosophy and psychology dealing with Buddhist doctrines. So collection of suttas.
Abhidhamma is basically a collection of suttas or the teachings. Okay, Abhi means higher and Dhamma means teachings. It forms third part of Tripitaka, Pali Canon, fundamental to Theravada Buddhist tradition. Theravada. It's important, yaar. Theravada बुद्धिस्ट ट्रेडिशन यहाँ बात हो गई इसकी पाली पाली इज अ लैंग्वेज तो इज बेसिकली recognized as classical language in literature. It is an ancient language, of course, in which Buddhist and Jain जो भी literature written. So त्रिपिटका की बात हो रही थी थर्ड पार्ट ऑफ त्रिपिटका सो विनय पिटका एथिकल मोनास्टिक रूल्स डिस्कोजर ऑफ बुद्धा प्रिंसिपल्स आ जाते हैं इसमें ठीक है made up of 7 books. It explores human experience, including nature of consciousness, क्या है universal mental function, cultivation of mindfulness. Okay. Reserve Bank of India bars 4 NBFCs from granting the loan. What is NBFC? Non-banking financial company. The RBI issues direction in exercise of its power under this article under the RBI Act 1934 based on material supervisory concern observed in the pricing policy regarding their weighted average lending rate and the interest spread जो भी वो WLR रेट था उनका और इंटरेस्ट स्प्रेड चार्ज ओवर द कॉस्ट ऑफ फंड्स जो भी चार्ज कर रहे थे ओवर द कॉस्ट ऑफ फंड उससे रिलेटेड तो सुपरवाइजर हुआ वो उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया गया है ठीक है तो NBFCs आर व्हाट it is a company registered under the Company Act. This primarily engaged in lending services, but exclude institution mainly involved in agriculture, industry activity, trading goods और इसमें available थी ठीक है Okay, the NBFC are different from banks. कैसे डिमांड डिपॉजिट नहीं चलते यहाँ पे do not form part of a payment and settlement system and cannot issue checks चेक्स नहीं इशू करते हैं The deposit insurance facility of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is not available. I'm not aware of that, so that's why I'm not going. Okay, let's move further. So, framework for integration trustworthy AI into defense operation launched. Trustworthy artificial intelligence. So, launching modern warfare कैसे करेगा ये this will be a separate topic to read, so we'll not do it in this. But basically you can see कोई मिनिस्ट्री मेंशन नहीं है मेरे हिसाब से यहाँ पे so we'll do it later कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया एक्सेट्रा एक्सेट्रा ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट ओके ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 jointly published by the United Nations Development Programme plus Oxford Poverty and Human Development Initiative. Okay. The report overlays the violent conflict data with multidimensional poverty data to better understand their interlinkage across the countries. Okay, key finding countries at war have higher deprivations compared to non conflicting settings.
On the 10 indication, of course, across 112 countries, 1.1 billion, approximately 18% living is in acute multidimensional poverty. So across onto the 112 countries, around 18% या 1 billion बोल दो live in acute okay, acute multidimensional poverty. Now coming next, with 234 million, India was the country with the largest number of people in extreme poverty. So 234 million. So India is the largest. India is a country with largest number of people in extreme poverty. So MPI is a major reflect that multiple depreciation. So basically आपका देखा जाएगा GPI sorry ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. सो थ्री डायमेंशन जिसके जो है ये बेसिकली वो है आपके हेल्थ, देन द एजुकेशन ऑफ कोर्स एंड द लिविंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है. नाउ if a person is deprived of one third or more of indicators, then it is said to be MPI poor. 10 to 10 में लॉन्च हुआ था ये. इट एडवांसेस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो भी पॉवर्टी से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई. ठीक है. सो इट वाज इंट्रोड्यूस इंडियाज इंटरनेशनल जो सॉरी ये इंटरनेशनल है, जो इंडिया का अपना भी है एक. इंडिया का खुद का नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स IMPI तो 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था बाय ऑफ कोर्स नीति आयोग. ठीक. नाउ 10 original indicators of the global MPI model and has been added to indicator maternal health and bank account. तो जो ओरिजिनल इंडिकेटर रखे गए हैं वो वैसे के वैसे रखे हैं जो इंटरनेशनली यूज हो रहे हैं. ठीक है. तो 10 ओरिजिनल इंडिकेटर्स रिटेन्ड एंड प्लस इसके आपका बैंक अकाउंट प्लस जो मैटरनल आपकी हेल्थ क्या है तो ऐड किए गए हैं इसमें. ठीक है. ओके. ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB. तो इट recommends the inclusion of all antibiotics in definition of new drug. तो न्यू ड्रग जो क्लिनिकल ट्रायल रूल्स है. DTAB is a part of the Central Drug Standard Control Organization. ठीक है. DTAB is a committee constituted as per provisions of the Drug and Cosmetic Act. सो DTAB ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं था, बट इट इज़ अगर कमेटी है ये तो फिर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. DTAB constituted as per provisions of the Drugs and Cosmetics Act 1940. The highest statutory decision-making body DTAB functions by taking policy decisions related to technical aspects of the drug and cosmetic जो भी एक्ट एंड रेगुलेशंस है. ठीक है. एंड देन दिस इज द हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ कोर्स. Okay. India has extended its first ever rupee denominated LOC, which is line of credit, to Mauritius for a water pipeline replacement project. So it is a development assistance by India and under Indian Development and Economic Assistance through Exim Bank of India. So LOC is not a grant but a soft loan. Basically India ने फिलहाल में ही line of credit
दिया है किसको, मॉरिशस को। तो किसके लिए, फॉर वाटर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट का प्रोजेक्ट है कोई, ठीक है। तो थ्रू एग्जिम बैंक गया है ये, थ्रू एग्जिम बैंक। मूविंग फर्दर, एलओसी इज बेसिकली नॉट अ ग्रांट कि आप डायरेक्टली मनी दे रहे हो, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सॉफ्ट लोन, ठीक है। सॉफ्ट लोन मतलब बेसिकली ग्रांट्स पे कुछ इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। which is to be repaid by the borrowing government, जो भी लेंगे। LOC has helped to promote export of Indian goods and services। देखो अगर आपके बीच में रिलेशन अच्छे हैं तो आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा होगा। तो अगर लाइन ऑफ क्रेडिट आप मॉरिशस को दे रहे हो फॉर द पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए, तो आपके जो रिलेशन है वो अच्छे बनेंगे एंड यू विल फर्दर गो विद द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। Over 300 LOCs worth 32 billion USD have been extended to 68 countries, covering around 600 projects. So, okay, minimum support price (MSP). Recently, government has increased MSP on wheat and five other rabi crops. So 22 crops, five crops, wheat and five other rabi crops, ठीक है। तो बेसिकली अब फार्मर के लिए जो प्राइस होता है दैट इज अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। Okay, so these are the things not much important for us. Bushveld igneous complex. Researchers have discovered living microbes within a sealed fracture of a 2 billion-year-old rock from BIC in South Africa. This is oldest example of living microbes. So oldest example of living microbes found in ancient rock. Ancient rock 2 billion years ago. Okay. So in South Africa, 2 billion year old. ठीक है, दिस इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। ओके, मतलब इस एरिया में जो है 70% ऑफ द वर्ल्ड्स माइंड प्लेटिनम पाया जाता है। ग्रीन एंड ब्लू वाटर, द कमीशन, ओके सॉरी, the commission, Global Commission for the Economics of Water released the Economic of Water report highlighting green and blue water. Green water refers to moisture in soils and vegetables. Green water is the moisture in the soil and vegetation. Parts of hydrological cycle, green water is absorbed by roots. So this is basically अगर आप soil में ये moisture है, moisture in the soil, तो basically क्या है, this is absorbed by the roots, used by the plants and reverse back to the atmosphere by the process of transpiration. ठीक है, it is a vital for generating rainfall of course. Now blue water, ब्लू वाटर की बात करेंगे तो इट इज अबाउट surface and it is about encompassing surface and groundwater found in surface and the groundwater जो भी है ये founded in lakes rivers, जो भी जहाँ फाउंड होता है, ठीक है। इट इज रिचार्ज बाय प्रेसिपिटेशन, बारिश के साथ ही फिर से आ जाता है ना। Hulog given, the National Board of Wildlife deferred its node for oil exploration in Assam और होलोंग अपर गिबन सेंचुरी, ठीक है।
तो इसका नाम एक ही एनिमल हैबिटेट पे रखा गया है, हुलॉक गिबन। लेट अस जस्ट नाउ नेम डाउन द हॉलो होलोनगपर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट या फिर हैबिटेट है सिर्फ ये, हुलॉक गिबन। ठीक है, सो इट इज द ओनली एप्स फाउंड इन द कंट्री। बेसिकली हम हुलॉक गिबन की बात कर रहे हैं, ओनली apes found in the country. It is basically of two types, western hoolock gibbon and eastern hoolock gibbon. Western and eastern hoolock gibbon। तो हम इसके बारे में ज़्यादा समझाई देखेंगे। ईस्टर्न होलोक गिब्बन inhabited specifically pockets of अरुणाचल प्रदेश, एंड द वेस्टर्न वन की हम बात करें तो वेस्टर्न वन जो है is listed in as a endangered in IUCN Red List, and eastern is vulnerable। Okay, they are very important for us। ठीक है, हाइपर यूनिफॉर्मिटी। Hyperuniformities, so researchers have explored the mechanism behind the recently discovered exotic disorder state of matter, hyperuniformity. So it is a property of certain heterogeneous media in which the density of fluctuations of long wavelength range decay to zero। So basically certain heterogeneous means अलग अलग मीडिया है, कोई है जैसे कि एयर के बाद वैक्यूम आ जाए ऐसे। ठीक है, तो which density fluctuation in the long wavelength ranges, मतलब जो लॉन्ग वेवलेंथ होंगी जो एंटर करेगी तो उनकी जो फ्लक्चुएशन के कारण वेवलेंथ की रेंज हो जाएगी वो डिके टू जीरो हो जाएगी। फ्लक्चुएशंस आर सप्रेस्ड एज द सिस्टम ग्रोज, जैसे जैसे आप सिस्टम के अंदर जाते जाओगे वो ग्रोस मतलब फ्लक्चुएशंस कम होती जाएंगी एंड दे आर गोइंग टू बी सप्रेस्ड। लिक्विड टू सॉलिड गए। ठीक है, where it is found, so it is quasi-crystals, biological emulsion, soft and biological emulsion colloids। तो इसकी एप्लीकेशंस है एनर्जी एफिशिएंट फोटोनिक डिवाइसेस, ऑप्टिकल डेटा ट्रांसमिशन और फिजियोलॉजिकल फंक्शन सेल कंट्रोल करने के लिए। PFAS, the new researchers suggest the exposure of PFAS may impair kidney functions through disruption of gut microbiota। तो PFAS often dubbed as PFAS are called as forever chemicals, often dubbed forever chemicals because these chemical persist in environment. Forever chemical persist in the environment and human body, breaking down extremely slowly। It is a man-made chemical used in everyday product। ठीक है, cookware में, water repellent clothing में etc। PFAS exposure has been linked to several diseases। Cardiovascular disease हो सकती है, heart से related, and the cancer। मार्चिनिया, सो इनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने विजिट किया, अब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने विजिट किया मार्टिनिया में, विच इज़ हम कल भी देख चुके हैं, सहारा, जीजिया, मोरक्को वगैरह। ओके, फॉर द टाइम बीइंग इट इज इनफ। सो from important point of view, so let us just write down a global commission on the economic of water। Commission on the economic of water releases the economy of water report। ठीक है, उसमें ग्रीन वाटर और ब्लू वाटर था। बेसिकली इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट,
DTAB as a committee. This is of course MPI report, very much important. Uh, these two, one will be I am not aware, but of course it is an easy to learn कि आपका एनबीएफसी पे जो बाहर थे वो लगा दिए गए, ठीक है, लोन्स के परस्पेक्टिव में. और ट्रस्टवर्दी आई विल सी इट लेटर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट बहुत जयशंकर साहब गए हुए थे पाकिस्तान. और दिस इज अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मेंस का वेरी मच क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है यहाँ से बहुत अच्छा. ठीक है, सो विल डू नेक्स्ट वन इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फॉर नाउ.